Hello, Devi or Sanjana. Welcome back to Sky is Blue. It's your boy Mrinmoy, the best coder in Noida Sector 130 because, well, what are the chances कि Noida Sector 130 में एक और expert बैठा होगा? And come on, let's put some respect to the title. मेरे साथ हैं मेरे प्रिय मित्र, कैमरा ऑन नहीं है वैसे, बट तुम कुछ बोल सकते हो. I can forward your message to my viewers. हेलो पैम। मेरे प्रिय मित्र, मुझे अगर देखना है तो मृण्मय की रिसेंट वीडियोस में जाके देख सकते हो। मेरी एंट्री हुई थी, लॉर्ड एंट्री, जुआरी वाली। मेरे भाई का चैनल है द रेड कार्ड. प्लीज गो एंड विजिट हिज चैनल. द रेड कार्ड नहीं है, रेड कार्ड डालना सिर्फ। नहीं। रेड कार्ड डालना बिकॉज मेरे भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है, सो दैट्स वाई भाई का चैनल का नाम रेड कार्ड है. रेफरी ने तो दी नहीं, मैं दे देता हूँ. नहीं नहीं, मजाक सेट के. मेरा भाई बहुत तगड़ा इंसान है. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. और जब मैं BMW खरीदूंगा तो मैं ड्राइवर ही नहीं को रखूंगा. मजाक कर रहा हूँ, मजाक. It's all jokes. I have huge respect for my brother. And anyways, I digress. Let us start. एक सेकंड, क्या करना. हाँ, ये क्वेश्चन करने वाला था मैं. दिस इज पिछले कॉन्टेस्ट का F because I looked it up. I looked up atcoder beginner contest 439 और A से E तक का लगा रखा था लोगों ने, किसी ने F नहीं बना था, तो I was like, and A से E तक मैंने भी बना दिया था. So I'm like, okay, let me do F now. Let me try F. And मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है F वाला, ठीक है. ये कहाँ है? ओके, हाँ. सो बेसिकली इट्स लाइक, एक सेकंड दिया क्या? ओके, परमिटेशन दिया. हाँ. सो you have a permutation. एक सेकंड, परमिटेशन है कि एरे है? परमिटेशन है. P1 P2 P3 ब्ला 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 Pn. एंड ओ वाओ, काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है सब कुछ. इट्स अ गुड थिंग. लेट्स नॉट जिंक्स इट. खैर, ओके. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द number of subsequences of P now that satisfy condition C. Now you may ask, hey Mrinmoy, what is condition C? ऐसी क्या condition है that we have to satisfy, और ऐसी क्या condition है that is so tough कि atcoder वालों ने उसको F पे रखा? Let me explain to you. So the condition is basically, imagine कोई index है I, and I is between 1 and n. Okay, so it can't be 1, it can't be n, it can be 2 or n minus 1 and everything in between. ठीक है. So A of I, imagine ऐसे कोई indices है, ठीक है, where A of I is greater than A of I plus 1 and A of I is greater than A of I minus 1. ठीक है. This condition is satisfied. ऐसे समझ लो, let's say x number of indices हैं that satisfy this condition, and imagine y number of indices ऐसे हैं between I and n where A of I is less than A of I plus 1 and less than A of I minus 1. मतलब it's local minima and local maxima type of thing. So basically the number of local maximas are defined only over 2 to n minus 1 should be greater than the number of local minimas. That's the thing, and that's the question basically. Now you're going to say, oh Mrinman, अब आप बताओगे कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. गलत, मैं नहीं बताने वाला ये चीज़, ठीक है. दिस इज मेरे औकात के बाहर का क्वेश्चन. सो वी आर गोना गो हेड ओवर टू ChatGPT एंड मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे ChatGPT यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. You don't have to straight away look at the tutorial, जो कि अपन करेंगे अगर ChatGPT is unable to solve, but since मैंने Pro ले रखा है, I don't think that's gonna be the case. Well, not Pro Plus, Pro is 20,000 का. Yeah, let me ask it in my own words. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं, थोड़ा खुद का दिमाग लगाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन उठा के पेश नहीं कर देते. So what I'm gonna ask it is given, एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है ना? I hope हो रहा है. Yep, हो रहा है. Given a permutation P of size n, what are how would you
calculate the number of subsequences where the number, एक सेकंड, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ज़्यादा होना चाहिए. Yep. Where the number of local maxima is strictly greater than the local minima. Also, the local maxima is the first and last index of the subsequence won't be considered in the local maxima and local minima. You know what? 50,000 rupees I can bet कि ये एक standard problem का twisted version है, because that's usually what happens in atcoder. I hope मेरी आवाज़ ज़्यादा low नहीं है. Blah 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 हाँ नहीं है. कि for in subsequence length only internal elements can be low. Okay, internal elements बोलते हैं इनको. That's pretty interesting. Crucial observation. ठीक है, this isn't too heavy. Okay, basically let's read this. Let's get an idea. ठीक है. Endpoints are ignored. Crucial observation, permutation in the sequence of distinct elements. Hence, any permutation of any subsequence of permutation, the difference always in how is that possible? More precisely, the subsequence starts with an upstep and ends with downstep maximum equal to minima. It starts up, ends up maximum equal to minima plus 1. So, okay, this is pretty interesting observation. ये नहीं पता था मुझे. Ascent and ends with an ascent. Huh. Okay. Reformulation of the problem. Count the subsequence such that first two chosen elements form an ascent. Last two chosen elements form an ascent. Okay, how did you get to that conclusion? How did you get to that conclusion? Can you prove that ascent descent thing, that the difference between number such indices is always 0, minus 1 or 1? Convert to up-down signs given a sequence defined for each adjacent pair. Okay. Local extrema, sign changes. AI is a local maximum if, so it's like what, plus minus. ठीक है, तो प्लस और फिर माइनस, प्लस टू माइनस, एंड AI is a local minimum if, ठीक है, minus plus. Maximum number of plus to minus and number of minus to plus. Endpoints don't matter exactly your rule, ठीक है. Step 3, in any plus minus string, those transition counts differ by at most 1. कैसे? ओ, प्लस टू माइनस अगर हुआ है फिर माइनस से प्लस भी तो होना पड़ेगा. Okay. Okay. The transitions alternative to C plus minus, the next iterator must be change if any must be minus to plus. So okay, फिर हो गया. Okay. This makes sense. This makes a lot of sense. ठीक है. अब I can understand.
Okay, now I understand. Ends with the descent and starts with the descent, ends with the descent. पहले में प्लस होगा, आखिर में प्लस होगा, प्लस टू माइनस हो रहा है, माइनस टू प्लस हुआ होगा, फिर प्लस टू माइनस हुआ होगा. सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि माइनस प्लस टू माइनस हो, instead of doing this in my head, let me entertain you a bit. Go down. So a of I minus 1, a of I plus 1. अगर बढ़ रहा है अगला वाला, लेट्स से ये बढ़ा है, तो देन वी एड अ प्लस साइन. और अगर अगला वाला घट रहा है देन वी एड अ माइनस साइन. सो अगर प्लस टू माइनस, लाइक फ्रॉम इंडेक्स j टू j प्लस 1, अगर प्लस से माइनस जा रहा है, दैट मीन्स कि वी हैव अ गुड वाला इंडेक्स जिसको ज़्यादा होना चाहिए. लेट्स कॉल इट x, हैश ऑफ x, नंबर ऑफ x इंडिसेस. एंड देन अगर अगर हमें एक और x चाहिए तो बीच में एक y वाला तो आया ही होगा, यू नो, बिकॉज इसके बाद माइनस के बाद अगर तुम्हें ट्रांजिशन चाहिए, या तो सारे माइनस हो या फिर इसके बाद एक प्लस हो, देन माइनस टू प्लस, विच वुड बी sort of like a of I is less than a of I minus 1 and a of I plus 1 is greater than a of I. So minus plus minus plus. और अगर मैं चाहता हूँ कि it's sort of like even and odd, you know, odd number आता है, फिर अगले odd के पहले एक even आता है, फिर odd आता है and all that. So किसी भी given 1 से लेके n numbers तक, the difference between odd and even is at max 1, you know. It can't be 0. It can be 0, it can be 1, but उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. So imagine अगर कोई even number है, so 1 2 3 4, that's like odd दो है even दो है, but if it's like an odd number, then only, because start odd से हो रहा है, then only we can have a number that is odd number that is greater than even. 1 2 3, so दो odd एक even. So my point is कि अगर तुम negative to positive वाले transition से start कर रहे हो, then what you're gonna have a positive to negative in between, और फिर तुम्हारे पास एक अब दोनों बराबर हो गए. अब इसको बढ़ाने के लिए एक ये भी बढ़ाना पड़ेगा, so then it's like नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो ये चीज़ कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी इन दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो. सो वी गोना स्क्रैच दैट, वी गोना प्रिटेंड, नो वी नॉट गोना प्रिटेंड, वी गोना अज्यूम ऐसा एक सिनेरियो जहाँ पे प्लस से नेगेटिव जा रहा है, एंड देन नेगेटिव से प्लस जा रहा है, एंड देन अगेन प्लस से नेगेटिव जा रहा है. सो देन द नंबर ऑफ सच इंडिसेस is greater than some number of such indices. So it's basically like ascent a of 2, like not a of 2, but कहीं पे somewhere in between we have, हाँ like नहीं स्टार्टिंग में ही प्लस होगा, नहीं तो पहले माइनस हुआ तो फिर प्लस आने के लिए ये चीज़ का बढ़ जाएगा. सो a of 2 has to be greater than a of 1. So a of 2 is greater than a of 1, and then it has to end with a descent plus 2 negative, right? That's how it has to be. Then a of n minus 1 has to be, अच्छा से लिखता हूँ उसको, a of 1 has to be, and then बीच में जो भी जैसे k number of elements है, तो a of k minus 1 has to be, छोटा हुआ ना तो has to be greater than a of k. और फिर बीच के तुम कुछ भी करो, doesn't matter, this is always going to be the number of x is always going to be the number of y in such a case. थोड़ा जूम आउट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे मैथमेटिकल चीज़ें देखना. आई लाइक दैट.
Okay, not doesn't look that pretty, but we're not here to make it pretty. And it works. ठीक है, like हमेशा it doesn't always have to look pretty. So okay, so I got that. ठीक है. उसके बाद ये क्या कहना चाह रहा था? So local maximum extent. A regular reformulation of the problem counts subsequences length such that form an ascent last to chosen element form. नहीं. Starts up, ends up. नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? Shouldn't. Okay, if the last step is minus, then shouldn't be that the subsequence starts with an ascent, a of 1 is less than a of 2, and ends with a descent a of k. Let's get a of k minus 1 is greater than a of k. Yes, exactly. If the last step is in direction where subsequent descent, so second start is a plus 1 and praise about the shield last step. ठीक है. Okay, great. Okay, great. I understand up to this part. What next? Because hand holding is absolutely necessary. है कि नहीं? है कि नहीं नवनीत भाई? नवनीत भाई also agrees. हैंड होल्डिंग जरूरी है ना? अरे रसमलाई RSMA all R small रसमलाई. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आई अगर ले लेते एज एन इंडेक्स so that would have been रसमलाई, still not रसमलाई. Never mind. Next, you can count subsequences such that the first chosen pair and last chosen pair, everything in between can be chosen. Oh, so basically मेरे को बस so it's like मैं दो pairs choose कर सकता हूँ and बीच में sort of like okay. n की size क्या है? Okay, can't do DP. Oh my god, too much. थोड़ा सा खुद का दिमाग आता है इस पे. टाइम कितना हो रहा? I'll get back to you. Hey yo, so मैं समझ गया क्या है, what it's all about, and damn, that's actually pretty genius. So let me write down the formula, the great formula that is. Ooh, I like formulas. Uh, I don't know how do you write? Okay, so dp1. Now hold on, suffix 1 or something. I don't know. Let's just call it dp1 of I multiplied by dp2 of j multiplied by 2 to the power j minus I minus 1, and you have to sum it up over all I less than j and j is less than equal to n and I is greater than equal to 1. Yep, this is answer for all subsequence with size greater than equal to 4. For subsequence that are of size equal to 3, it's basically just summation of all dp1 of I into dp2 of I. That's it.
overall i's. That's about it. And so what this means, dp1 of dp1 of I and dp2 of I, what do these mean? ठीक है, they don't mean anything complicated. dp1 of I means number of indices that are number of indices j where j is less than I, because हमें ऐसा कुछ चाहिए ना, a of 1 and a of 2 and then something a of k minus 1 and a of k, right? तो dp of I समझ लो ये वाला है एंड dp of j समझ लो ये वाला है, ठीक है? सो dp of I, इसमें मैं काउंट करूँगा कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, कितने ऐसे indices हैं पीछे where that j, okay, so sorry, here मुझे k लिखना चाहिए, this k भी टेकन है। इस dpi को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? dp2 को भूल जाओ, dp1 की बात करते हैं। a2 के पीछे कितने सारे ऐसे इंडिसेस हैं वेयर द वैल्यू इज स्मॉलर, सो एक असेंट हो रहा है, दैट नंबर इज स्टोर्ड इन a of j is less than a of I, that number is stored in dp1 of I and dp2 of I stores कितने सारे, dp2 of j और I would store कितने सारे ऐसे indices हैं after I where that value at that index is greater than this, sorry less than this, right? ये चाहते हैं ना अपन। so these are stored in this। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको मैं फेनविक ट्री से कैलकुलेट कर सकता हूँ। you might be confused at that but don't worry, I'll explain। and once I've calculated this, ठीक है, अब it's still o of, चलो ये तो मैं कर लूँगा, ये एक लूप चला के मैं कर लूँगा, ठीक है? let's say dp1 of I and dp2 of I मैंने सारे इंडिसेस के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो चलो o of n में हो जाएगा ये वाली चीज़, बट ये वाली चीज़ इट विल टेक o of n स्क्वायर, ठीक है? और दिस आई थिंक यू नो हाउ दिस केम, ठीक है? लाइक इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इनके बीच के भी जितने एलिमेंट्स होंगे, आई कैन ईदर टेक और नॉट टेक, इट डजंट मैटर। सो दैट्स हाउ वेयर द टू का थिंग केम फ्रॉम। एंड नाउ द अल्टीमेट थिंग कि ये o of n स्क्वायर है, इसको छोटा कैसे करें? आई टेल यू इसको कैसे छोटा करें। सो हेयर कम्स द मैथ पार्ट, ठीक है? हेयर कम्स द इंटरेस्टिंग मैथ पार्ट। ओके, एंड आई वाज रॉन्ग कि this is not a standard problem. I don't think this is a standard problem. I think ChatGPT बता चुका होता, or maybe it is a standard problem, ठीक है? But at least it tests your knowledge of some standard data structures like Fenwick trees. So, but still doesn't count as a standard problem. खैर, dp1 of I into dp2 of j into 2 to the power j minus I minus 1. Now what we will do here is j इसके साथ बिलोंग करता है, I इसके साथ बिलोंग करता है, -1 को भी इसके साथ ले लेंगे। सो दिस बिकम्स dp of I multiplied by 2 to the power minus I, बस इतना रखते हैं, multiplied by dp2 of j multiplied by 2 to the power j minus 1. Okay, how about that? So this completely depends on I, this completely depends on j, and at any given I हमें उसके राइट साइड में जितने j हैं उन सब से ये चीज़ करनी है। So it's like basically answer at I would be dp of 1 of I multiplied by 2 to the power minus I multiplied by summation of all dp2j 2 to the power j minus 1 where j is greater than I. Isn't that how it should work? That's how it should work, I think. So you don't have to do anything, just prefix sum of this value multiplied by this value at every index, and that's about it. Yep, and I'll go from 2 to n minus 1 because 1 से
बिकॉज 1 से लेके n तक का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसके पहले कुछ नहीं है, एंड i इज़ बेसिकली वो एलिमेंट जिसके पहले कुछ है, एंड j इज़ वो एलिमेंट जिसके बाद कुछ है. Now the question rolls back to मैं dp1 of i, हाँ ये भी if you're confused, माइनस की पावर कैसे मैं कैलकुलेट करूँ, लाइक मॉड्यूलो से सब हो जाता है, ठीक है. एक्चुअली मैं भी श्योर नहीं हूँ मॉड्यूलो से कैसे होगा, बट I'll see something, ठीक है. हाँ मैं I'll look this part up, नेगेटिव मॉड्यूलो कैसे कैलकुलेट करते हैं. बट हाँ, एक्चुअली आई थिंक डिवाइड का मॉड्यूलो कुछ होता है. आई थिंक डिवाइड का कुछ है क्या, लेट मी लुक इट अप. लेट मी सी इन माई टेम्पलेट डिवाइड का कुछ लिख रखा है कि नहीं मैंने. मल्टीप्लाई का तो है, डिवाइड का है, हाँ. सो 2 to the power, हाँ तो डिवाइड कर दूंगा मैं इससे, लाइक इसको क्लोज कर देते हैं. हाँ डिवाइड कर दूंगा, लाइक इस वैल्यू से इस वैल्यू से 2 to the power i डिवाइड कर दूंगा, एंड देन this will be it, this will also be it. I mean j is also always going to be greater than 1, so not to worry about this. हाँ I 2 की पावर कैलकुलेट करके रखूँगा, एंड I just need the divide function. ठीक है. सो बैक टू दिस क्वेश्चन, dp1 कैसे कैलकुलेट करें एंड dp2 कैसे कैलकुलेट करें. सो फेनविक ट्री इज अ थिंग, ठीक है. आई विल हैव 1 2 3 ऐसे करके n साइज का मैं एक एरे रख सकता हूँ जिसमें इनिशियली सारे जीरोज रहेंगे, एंड व्हाट फेनविक ट्री डज इज वो इट कैन गिव मी the answer for sum of 1 to ith index in O of log n time, ठीक है. सो जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट जाते जाऊँगा, मैं यहाँ पे 1 मार्क करते रहूँगा, एंड फिर मैं फेनविक ट्री में भी अपडेट करते रहूँगा, एंड थ्रू अ क्वेरी फ्रॉम द फेनविक ट्री मैं ये पता कर सकता हूँ कि किसी भी इंडेक्स के पहले कितने सारे 1 आए हैं, एंड फिर उससे मुझे पता चल जाएगा कि उस इंडेक्स से छोटे कितने सारे उस वैल्यू से छोटे कितने सारे वैल्यूज़ में इनकाउंटर कर चुका हूँ. इट सीम्स अ लिटिल बिट हवा हवा में बात है. इफ़ यूर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, एंड आई सजेस्ट, आई मीन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तुम्हें, दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग. मैं बस अपना अपना बता रहा हूँ कि अपने करते करते मैं बस आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड. सो आई मीन सॉर्ट ऑफ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. आई थिंक मैंने इनफ बता चुका हूँ. आई थिंक इसके बाद जो the curious mind will figure out after this. You don't have to be too intelligent for this. Fenwick tree, you know the keyword Fenwick tree. Striver is a great teacher. That's I'll say that. हाँ मैंने वहाँ से पढ़ा Fenwick tree. That's what I'm trying to say. Not saying he's the only guy, but वो अच्छा पढ़ाता है. Actually I'm thirsty. Give me a second. Okay, I'm back from my little break. Let me download the template for the thing, the Fenwick tree. Yes. उसके लिए I'll go to my GitHub, which is right here. नहीं चाहिए premium. Pinboard. I think public. हाँ, you can access this. TSS stuff, boilerplate, heap, segment tree, Fenwick trees. Excuse me. Okay, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए. यूज़ कैसे करता हूँ वो देख लेते हैं. प्रीफिक्स सम फेनविक ट्री एरे दे दो. ओके सेकेंड, ठीक है. n+1 ओके 1 इंडेक्सिंग, n+1 पोजीशन -1. ओके पोजीशन -1 डजंट मैटर, बस पोजीशन दे दो. उस पोजीशन पे यू डू द थिंग, एंड देन ओके, एंड देन अगर मुझे फिल करना है तो प्रीफिक्स सम चाहिए तो उस पोजीशन तक का मुझे मिल जाएगा, और अगर मुझे फिल करना है तो 1 ओके वैल्यू, एंड देन index position, and then end. Okay, got it. इसको कॉपी किया. Now watch me get into flow state.
नहीं करूँगा मैं आपसे, मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज मेरा एनिमी करता है वो. Control C, shift insert. Okay, fill pen. Let me remove this. D85, D85G, Q, N and P. ठीक है. Int N, scene. Let me put a dark background. ठीक है. VI, P and N+1. I'm glad this is permutation, otherwise probably would have been much more difficult. I think I would have to use ordered sets or something. P of I, great. Now Fenwick trees. Oh, actually dp of this one, dp1, dp2, dp2 N+1 for int I equals next end. अब Fenwick tree पे बनाना पड़ेगा मुझे, उससे मैं dp1 और ये दोनों फिक्स कर सकता आई थिंक. नहीं, एक dp2 के लिए I'll have to build another Fenwick tree. उससे छोटे कितने हैं और उससे बड़े कितने हैं. And नहीं, I just one Fenwick tree will do. This one for int I. एक सेकंड. हाँ ठीक है, permutation ठीक है. I equals to tag background. There we go. I equals to 1, I less than equals to n, नहीं, n I plus plus. Fill fen. ठीक है, fill fen. पहले index 1 and left values L should be enough. L dx is equals to L left underscore left is equals to pref sum and then उस इंडेक्स से एक सेकंड, उस वैल्यू से कम कितने, हाँ तो उस वैल्यू से कम होने चाहिए तो एक माइनस करूँगा और वहाँ तक का बताएगा. ठीक है. pref sum fen सारे जीरो से इनिशियलाइज, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. p of I -1, तो ये मुझे पता चल जाएगा. int art is equals to pref sum fen n minus pref sum fen p of I. There we go. dp of नहीं, होल्ड ऑन. हाँ, राइट नहीं हो पाएगा. नहीं, इसके लिए अलग फैनविक ट्री बनानी पड़ेगी. fen1 fen2 +1 इसके लिए अलग से करूँगा. मे बी एक साथ हो जाए, थोड़ा 2 मिनट और सोचूं, बट you know what, it's not that much expensive to do this. So dp of I is equals to underscore left dp1 of I. This is not flow state, but whatever, I'm enjoying this. You're enjoying this, come on, don't lie. इतनी देर तक कौन देखता है? You're enjoying this, I think. हाँ, उसको भी करना मुझे. fill fen. Fill pen index is p of I, and there we go. Okay, now we have
अरे श्योर इसको पहले नहीं करना चाहिए था मुझे, एनकाउंटर कर चुका हूँ। हाँ ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस int right equal to press some, I can use underscores. I feel cool using underscores. Some fen n minus pref some fen और फिर what pfi, तो वहाँ तक अगर कुछ हो रखा है तो वो हटा दो and then you'll get जितने भी indices का सामना हो चुका है 1 2 3 4, हाँ this should be it, ठीक है, ep2 of I is equals to underscore right fen just like usual, fen1 p of I and size also pow2 vi pow2 कितने लगेंगे, let's just assume 10 to the power 5, 3 into 10 to the power 5, so it's like what 3 into 10 to the power 5, so 3 e5 plus 1, okay, void fill pow 2, एक सेकंड, एक ही तो वो है, एक ही तो है, तो I can just do this, vector of pow 2 n plus 1 2 to the power इतना and माइनस कम ही होगा, ठीक है, for int I equals to and then pow 2 0 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2, then 1 I less than equal to n plus plus pow 2 of I is equals to pow 2 of, oh wait a second, ये जो दिया है ना इसमें this thing, ठीक है, this does not need modulo यहाँ पे I'll change this shit up, shift insert, there you go, fix that. Now p of pow 2 of I minus 1 multiplied by 2 modulo mod, back this shit up, there you go, there we go, and take the power 2 is set. Now the answer for this is the summation of the suffix thing, so एक suffix का मैं वो बना लेता हूँ, suff of n plus 1, और इसमें ये कैलकुलेट करूँगा मैं, राइट, dp of dp2j multiplied by 2 to the power j minus 1 का प्रोडक्ट, एंड हर एक इंडेक्स पर करके फिर मैं इसको समीशन कर देता हूँ. Yep, sounds perfect, sounds extremely perfect. 4 of int I equals to 1, I mean इसको मैं पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है, समेशन मैं कर दूंगा, so suff of I equals to dp2 of I multiplied by pow 2 dp2 of I product pow 2 of j minus 1, and it's never going to be minus 1 because I is always 1 and greater than 1, so this thing minus 1 mod, yep, this should be right, this should be about right, dp2 of I, ठीक है. Now we have I equals to n minus 1, I greater than equal to 1, I minus 1 is suff of I is equals to suff of suff नहीं is equals to suff of I plus suff of I plus 1, then mod. This works, and now I have
int answer equals 0, for int I equals to 0. I don't need to create a new array. It's equal to n int part 1, which is val1, is equals to dp of this multiplied by this. So what do you write? Divide power of I. हाँ ओह ओके ओके, दो चीज़ें मुझे ऐड करनी है। हाँ हाँ हाँ, पहले पहले ग्रेटर देन साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाला कर लेता हूँ मैं ऐड। डिवाइड का फंक्शन कहाँ है? लेट मी सी हाउ टू यूज़ इट। डिवाइड और बस पास कर दो, और मॉड भी पास करना है, ठीक है। 117 dp1 of I multiplied by ओके ओके 2 और n-1 तक मैं जाऊँगा। लाइक आई सेड 2 से n-1 तक जाऊँगा मैं। 2 n अगर फोर्थ है तो आई शुड गो टिल n-3, यू नो, नहीं सॉरी n-2, बिकॉज n लास्ट पर होगा, n-1 सेकंड लास्ट पर होगा, एंड दिस इज थर्ड लास्ट, so n-2 technically. There you go. So divide dp1 of I, and then we have what, pow 2 of I, right? Huh. And then mod, that's good, that's good. तो ये वैल्यू 1 हो गई, and then int value 2 is equals to suffix of I plus 1, right? because ये स्टोर किया मैंने, pow this minus 1, this ठीक है, this is good, and answer plus answer is equals to answer, नहीं sir, plus equals to val1 multiplied by val2 modulo, then answer is also mod. There we go. और फिर one more touch up, which is for all the less than equal to n-1 plus of size 3 लिख देते हैं थोड़ा just for fun. Size greater than equal to 4, size equal to 3. This is val1 is equals to, oh इसमें 2 की कुछ भी नहीं होगा, तो बस like don't even need vals. equal to dp or dp1 of I, dp2 of I, mod, and then answer also mod, and that should be the answer, right? That should be the answer. और कुछ नहीं हुआ सही तो I'll just go and I'll just dump it on GPT, because I know कुछ minor सा mistake होगा. Okay, so fen 1 यहाँ पे 1, as we go here, यहाँ पे also fen 2, यहाँ पे fen 2, fen 2 2 2 1 1 2 2, there you go, great. G++ मेन, अब कोई भी गलती GPT ठीक करेगा, मैं नहीं, unless वो compilation error है, that उतना तो मैं ठीक कर ही सकता हूँ. I think we didn't get one. Let's see. Very unlikely कि बिना किसी error के सब हाथ see what I mean. Okay, now we're gonna dump this piece of elegant code into here, and okay, now here's my implementation. Please let me know what's wrong here. I honestly think it's 99% right.
1:45 right now. 1:45 a.m. Take your time buddy. कोई जल्दी नहीं है. मूवी बना रहे हैं अपन 45 मिनट की. You're very close. Thank you, man. Is as greater on the right, but you need a small. Okay. Right. So कितने सारे smallers हैं, कितने सारे smallers हैं. Right. Got it. Thank you so much, man. पता नहीं मैं क्यों ये सोच रहा था. Okay. P of I minus 1. There we go. नहीं टू नहीं करूँगा मैं आपसे. हाँ 4 इसका सही आया. Let me check this out. Yep. Let me check this out. 431610. I am highly confident this is correct. I'm human, my friend. Moment of truth. Am I good or am I good? Well, that was it, ladies and gentlemen. This is me signing off.